Don't forget to like, comment, share, subscribe, and press the bell icon so that the next time the episode comes up, you get a notification. Like, I don't know, have you ever sat and talked to your mother about what her hobbies are? And this is a question for all the listeners also, and you, Arun. Have you ever, sat her down? जैसे हम दोस्तों के साथ करते हैं ना कि I think तुझे ये करना चाहिए. You know how we treat other important people in our lives, like friends ki, I think you're good at this, you should do this. What are your passions? What do you like doing? Have you ever had that conversation with your mother? Because I haven't. I can't get myself to, because it's just, we've never been like that. Oh, you are very much boy looking. हमें तो लगा पास से हिलते डुलते आओगे. अबे लड़की है क्या क्या इतना वो कर रहा है, क्योंकि लड़की है तभी वो कर सकती है, लड़का नहीं कर सकता. Like there are a lot of boys who also complain they reject us. And friend zone us because we are nice. अरे भैया तुमको मेडल चाहिए क्या? आप देख रहे हो कि how fragile masculinity is. A lot of times going to therapy means you're pagal. It's more about male pleasure as per the patriarchal society we are living in. But that is not right. Hello everyone, this is Ankush Bahuguna and you've tuned into The Gentleman Show by The Man Company, जहाँ पर we will discuss the modern gentleman और हर वो aspect जो उनकी life से जुड़ा होता है, हर वो चीज़ जिसके बारे में हम सोचते हैं but mostly बात नहीं करते. आज हम बात करने वाले हैं क्यों इतना आसान होता है मम्मियों के साथ हर चीज़ शेयर करना. मम्मियों को सब पता होता है. मम्मी को ये भी पता है कि मदर्स डे पे तुम केक और गिफ्ट तो ले आओगे, लेकिन वो केक कट करने के बाद जो बर्तन धोने होंगे वो तुम नहीं करने वाले. तो वही आज हम डिस्कस करने वाले अबाउट मदर्स एंड हाउ ईजी इट इज़ टू शेयर एवरीथिंग विद देम विद अ वेरी स्पेशल गेस्ट अरुण, who is a comedian, who is a content creator, who's an RJ, who does a lot of things. And Arun, I want to say कि यार तूने single handedly ना अंकल्स की इज्जत सोसाइटी में काफी बढ़ा दी है. बढ़ा दी है with your cool content. मुझे तो ऐसा लग रहा है they are all coming at me. No. कि इतनी फालतू की उनको hate दिलवा दी है मैंने, but अरे नहीं, uncle has become a cool word now because of you. So that's pretty cool. But thanks for having me, Ankush. Yeah, I mean, I'm looking forward to having like a very good, insightful conversation about, mothers and sons, because I think that it's a topic जिसके बारे में हम लोग कितनी भी बात करें वो कम है. Right? Yeah, and interesting that you said कि जब हम केक ले आते हैं और जब कुछ सेलिब्रेट कर देते हैं then they worry about बर्तन and all. My mom would say नहीं केक भी क्या करना, नहीं चाहिए कुछ भी. I'm like, why are moms like this? क्यों नहीं चाहिए होता उन्हें कुछ? That's so typical. हर चीज़ में मतलब उनके लिए गिफ्ट भी लाओ तो they'll be like कि क्या ज़रूरत थी इसकी, क्यों पैसे बर्बाद किए. My mom तो is like full filmy. She'll be like नहीं बस मुझे बच्चों का प्यार चाहिए. And I'm like इतने डायलॉग बाजी मत करो. My mom is like हाँ मुझे सिर्फ बच्चों का प्यार चाहिए बट वो साड़ी के बाद. No, but सबसे पहले let's start with a question. मुझे पूछना है why the name झुमरू? Yeah, so honestly, when I started my digital presence, so I was a radio jockey. I'm no longer a radio jockey. Yeah. So when I started my digital thing, and I was like, पता नहीं मैं क्या content करूँगा. So I wanted to do food. I was in Bombay, Mumbai. So I was like, यार खाने का करता हूँ कुछ. But I knew मैं sustain नहीं कर पाऊँगा और I knew मेरा इतना बहुत ऐसा इंटरेस्ट है नहीं. सिर्फ मैं खाता हूँ, that doesn't make you a food content creator. या फिर मुझे अगर कुछ दिख जाता है रेडियो पे इंटरेस्टिंग तो मैं उससे बात कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ, but that still doesn't make me a food content creator. So I was like, चलो फूड से शुरू करते हैं. But I might do comedy, I might do other things. तो मुझे लगा यार कुछ जेनेरिक नाम रखता हूँ तो कल को कुछ भी चेंज करूँगा तो वो फिट हो जाए. Right. And this I really liked, and those in Delhi NCR know there is this play also, na, the Jumru in KOD. So मुझे बड़ा अच्छा लगा, and of course मुझे retro गाने भी अच्छे लगते हैं, and then Kishore Da, everything. So I was like, the Jumru is the perfect one. Fun fact, I was once in the process of auditioning for that show. Really? But I mean, the rehearsals were very hectic, so I couldn't make it. This was back when I used to learn, like, there was a very little phase in my life where I was like trying to learn how to dance professionally. Okay. Whatever that means. But yeah, I was doing that, and then Jumru usi time hua tha, and I was like, wow, this sounds exciting. Anyway, we've taken another tangent, so let's come back to discussing mothers. तो मुझे ये बताओ, what is, so I'll tell you. So बचपन में मेरा मेरी मम्मी का रिलेशनशिप ऐसा था कि so I grew up with two sisters which even you have, so our family setup is very similar, you know.
parents and then sisters. It's like practically we had 4 parents. Yeah. मेरी भी बहुत बड़ी बड़ी बहनें हैं दोनों. Yeah. एक 8 साल बड़ी है, एक 6 साल. तो it's like I've had 3 mothers. Yeah, very, very, very similar to that. And then a father also. So yeah, 4 parents. But मुझे ये बोलना था कि बचपन में क्या होता था ना कि मुझे ये सब लोग बाकी लोग बताते हैं कि जैसे मेरी एक मामी रहती थी आईएनए के पास, ठीक है. तो मेरी मम्मी उनके घर जाती थी क्योंकि वहाँ से आईएनए मार्केट पास पड़ती थी. तो शी वुड टेक मी एंड ऑल द कजन्स वर एल्डर टू मी. सो मेरी ऐसे किसी लाइक आई कुडंट प्ले विद देम, आई वाज अ किड. तो मेरी मम्मी मुझे वहाँ छोड़ के ना मार्केट जाती थी कभी कभी बीच में, बिकॉज आई मीन ऑब्वियसली बट उस टाइम I was someone जो उनसे I would just cling on to her and not let her go because I just didn't want to be left in a foreign place without my mother. So that was like that's my oldest memory of me and my mom's relationship. Ki she was the only familiar person in the room at any given time. Like even if my sister was around, my father was around, it was my mother that I would usually just go to. Like instinctively, she is the one that I would hold on to in every given situation. Same, even I had like that fear. Yeah. But मुझे लगता है उससे ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज भी थे. एक बार मैं एक शादी पे था and I thought my parents have left. मुझे वहाँ छोड़ गए हैं. यार मुझे my heart is thinking this because we've all like felt that कि कहाँ गए. वो I think 10 मिनट या वो जितने भी मिनट होते हैं तो मुझे लगता है वो यार छोड़ के चले. वो 30 seconds होते हैं actually. And when I like अभी भी मैं बात करता हूँ, my mom is like हाँ तुझे लगता है हम छोड़ के चले गए होंगे. And as kid you actually think. Yeah. But probably we have trust issues also. I mean clearly this podcast is unraveling things that we are not ready to accept about ourselves. But हाँ मुझे ये बता अरुण कि what is your relationship been like with your mother? Like how did it start? Where are you guys right now? Like you know the whole process of. So it started जब मैं पैदा हुआ तब से Really? relationship शुरू हो गया. Really? Yeah. Surprising. उतनी पुरानी बात है. तो वहाँ से बॉन्ड शुरू हुआ. Couldn't have guessed. I know, right? So मैंने ये बचा के रखा हुआ था. I didn't tell you पहले इसीलिए. तो I was like कि मैं secret रखूँगा. So anyway, yeah, that's how it started. Jokes apart, but I think as every kid, I was always the most closest to my mom. Right. And because they see you grow, they've seen different phases of you, they see different sides of you. And also, I think कुछ लोगों का एक तो मम्मियाँ हम ऑफ कोर्स ये बोलते हैं कि मम्मियों से क्लोज होते हैं ये होते हैं, बट आई थिंक एज समटाइम्स mothers as persons are emotionally their emotional quotient is high, which is the case with my mom. So that really helped. Like she could really see things that others could not. Like she identified that I can do some creative things which I also didn't know. Right. Like she knew that, like she would send me to every summer camp, every class, every hobby class that there ever existed. So she really, like, of course I've done everything during my growing up days. Right. Which helped me identify कि मैं क्या करता हूँ. तो मुझे ऐसा लगता है और भी बहुत सारी चीज़ें, like she knew like what he's going through, what is in his mind. So her emotional sensibilities are, I think, strong also, which really helped, and that is why I've always been Close to her. So it's not changed over the years. I won't say that because it has. जब से मैं move हुआ हूँ अपने शहर से. पता था. No, उसमें भी एक twist है कि so my mom would always get worried कि ये घर पहुँचा है नहीं, या आज खाना खाया या नहीं, या अच्छा ऑफिस गया तो मतलब update basically. She would be like अच्छा तुझे time नहीं मिलता but just message me, and I would do that, and it became a practice. It's a fair ask. Yeah, it is a fair ask. और मुझे तो अब लगता है कि जब मैं कभी पेरेंट होऊंगा तो मैं तो बहुत ही, मेरे ट्रस्ट इश्यूज इतने हाई हैं कि पता नहीं मैं कैसे अलाउ करूंगा अपने बच्चे को. अंकल होने की प्रैक्टिस अभी से चल रही है. Exactly. There is an uncle in me. I am like a 40-year-old locked in a 29-year-old's body. So definitely वो वाली एक प्रैक्टिस और रिचुअल था कि मैं पहुंच गया हूँ और या फोटो खींच दी खाने की, having this, and then she would say इतना कम खाना, ये पोहे से क्या होगा, whatever. That happened. फिर my sister joined me here. Right. Very recently. She's very chatty. And I'm not a phone person really. So she's very chatty. She keeps talking to my mom and she gives all the updates. हाँ अरुण आ गया है, हाँ कल 11 बजे आ गया था, हाँ आज ये ले दिया, सब कुछ, every update. So I don't, बातों में सारे secrets भी निकल जाते हैं. वो भी. And now I'm like अच्छा ठीक है तो update तो मिल ही रही है ना. मतलब वो conscious choice नहीं है कि मैं अब message नहीं करूँगा क्योंकि अब update मिल रही है. But it's just that I think मैं अपने काम में लगा रहता हूँ, which is not fair. तो काम में लगा रहता हूँ, I think okay she knows I'm fine, I'm doing okay. So ठीक है, दोनों parties खुश हैं. So you sometimes miss out on telling things to her yourself because she knows that you know that she's getting the information from your sister. Yeah. So acha, so would you actually, so you know
मैं अपनी मम्मी के साथ इतना कंटेंट बनाता हूँ that everybody messages me saying कि यार you know we love your relationship with your mother, you guys are so cute together, this and that, and I keep repeating myself when I answer those questions. I keep repeating myself that what you see on social media is two individuals working together. You know, like she's an actor, so am I. I'm a content creator, she's an actor, and that's what we're doing. We're creating content together. But those videos can't be 100% true reflection of our relationship because, I mean, I've been very open about this that I don't share the healthiest relationship with my mother. So would you say that you're the kind of relationship that you share with your mother? Would you say that it's healthy? Yeah, it's definitely healthy. It's like two individuals existing on their own, knowing that they love each other, but they don't really feel obligated. At least I don't really feel I'll speak for myself. There's only one way to know the other side, I guess. तो वो है कि like she knows that I really love her and I know she loves me and that's how it is. Yeah. Yeah, but I wish there was like more communication. Sometimes I feel like guilty. Yeah. बुरा लगता है थोड़ा कभी-कभी. But मुझे भी, you know, like I feel कि जैसे mothers and relationships को depict किया जाता है सिनेमा में इधर उधर, उनको देख के मुझे लगता है यार, why is my relationship with my mother so much different and so much more complex, you know? जो हमें movies वगैरह में दिखाया था, so one tone and unidimensional that ये मम्मी है, ये बेटा है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं. But where is the real aspect कि, you know, sometimes your habits just are so annoying to each other कि like you can't sit in a room without fighting. मुझे एक और चीज़ कभी-कभी मुझे realize होता है कि यार मैं जितना भी, you know, all these qualities of my mom that I don't like, that she's a control freak and she's restless and she's, you know, she's not a problem solver. उनको अगर तुम problem लेके जाओ, she'll hassle you more and not give you solution. And with time I'm realizing I am all of that myself. surprise. And I'm like, you know, this one time I was just irritated at my mom कि आप इतने restless क्यों, आपके हाथ, हम रिक्शे में बैठे हैं, आप इतने restless क्यों हो, आपके हाथ क्यों चले जा रहे हैं, like, I mean, just calm down, I can see that you're so, like, hassled, fidgety, why, it's irritating me. ये बोलते ही मुझे realize हुआ, both of us are holding our bag like this. ऐसे एकदम छाती से चिपका के कोई लेके चला जाएगा अभी, मेरी मम्मी भी, मैं भी. And then I see her hands are tapping, my hands are also tapping साथ साथ. And I was like, मैं गुस्सा किस पे हो रहा हूँ यार, मैं exactly इनका कार्बन कॉपी हूँ. And sometimes that annoys me कि जो qualities मुझे इनमें नहीं पसंद हो, मुझ में क्यों आ गई यार. So do you feel that? A lot of qualities, a lot. So बचपन से मैंने ये सुना. So my mom is like a really productive बनना है मुझे. Yeah. एक तो I think because probably I think being a woman like that gender goes through so much कि अपने आप को prove करना and all that. Yeah. And वही नारी शक्ति and all, probably in that move ना she does Over, like, more than she's supposed to. Yeah, which is very annoying. मुझे उस पे भी बहुत गुस्सा आता है कभी-कभार कि why do you exhaust yourself? And then she would complain also, you know, I was exhausted myself. And I'm like, yeah, but that's your choice. Why did you do that at the first place? So she's very कि मुझे productive रहना, वो मैंने pick कर लिया है, which I don't like. Now hustling beyond your like capacity. Yeah. And मैंने बचपन से ये सुना है कि मैं मूवीज़ नहीं देखूंगी 3 घंटे ऐसे खाली बैठ के हाथ पे हाथ धर के बैठना, इट्स जस्ट लाइक वेस्ट ऑफ टाइम. इतना सुना मैंने. सो शी लव्स म्यूजिक बट शी कांट सिट ऐसे आराम से टू वॉच अ मूवी बिकॉज शी थिंक्स इट्स नॉट प्रोडक्टिव. नाउ आई कांट वॉच सीरीज. एवरीबडी अराउंड मी इज वॉचिंग सीरीज, इज जस्ट Netflixing and maybe chilling as well. Whereas I don't like it because I'm like, ये मैं इसमें 4 वीडियो निकाल लूँगा इतने टाइम में. And now when I'm friends with people who know how to chill and they're like क्या, and they go like अच्छा तूने ये फिल्म नहीं देखी. And I'm like yeah because I was working. and मेरा वीकेंड भी बिल्कुल पैक होता है. अगर मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे आई हैव माई स्केड्यूल कि मुझे ये जाना है, यहाँ जाना है, ये करना है. वो प्रोडक्टिवनेस वाली हरकतें मुझे अपनी अच्छी नहीं लगती. एंड आई हैव पिक्ड इट फ्रॉम हर. And वही people pleaser and same people pleaser, impatience, control freak. Like you said that you're a people pleaser but also a control freak. I relate to that. And my mom is such also a bad like combination that. though. Yeah, my mom is also like that. Like वो फिर ना क्या होता है, that translates into backseat driving. That you're just passive and you're telling people what to do things but you're also not doing them yourself. No, मैं तो फट जाता हूँ after few minutes. मैं ऐसे करता हूँ dude ऐसे कर ले and then I just guys अरुण का माइक ठीक लगा दो, ये फट जाएगा वरना. कर दिया उन्होंने finally fix. Okay, ठीक है. Do you want they more? were doing it ऐसे, ये पीछे कीजिए ये हाथ कर लूँगा मैं. Do you want more juice? Do you want more napkins? अभी बता दे please, फटना मत. No.
But yeah, so I feel मुझे ये भी लगता है कि ये जो like you said ना नारी शक्ति है, you know, other mothers do so much more and then they also complain, and that used to irritate me so much. It still does कि मतलब अपनी मर्जी से कर रहे हो फिर आप complain भी कर रहे हो, but you know now that I've also realized that when we say it's your choice, it's not really their choice, because you know a lot of duties that they do, there's no other way in the whole, you know, I mean we do live in a sexist society, right? So mothers के ऊपर जो भार होता है that's like unequal. मतलब जैसे for example, I was talking about resentment, right? So when I was growing up, I mean this is very personal, but anyway, I'm okay talking about it. When I was growing up, my mom is an actor, so she used to go to the hills, Garhwali movies में act करने for like weeks and sometimes a month. And what that like I would go to school and ऐसे parent teacher meeting वगैरह में, my parents have never gone for a parent teacher meeting, also because I was such a फट्टू kid कि मैं शैतानी भी पूरी तरह से नहीं करता था कि पकड़ा जाऊँ. तो मतलब मेरी पेरेंट टीचर मीटिंग इतनी स्कैंडलस नहीं होती थी, बट दे नेवर केम टू माई पेरेंट टीचर मीटिंग्स बिकॉज डैड वॉज बिजी विद वर्क, मॉम हैड शूट्स टू डू, एंड देन आई वुड सी अदर पीपल्स मॉम्स एंड यू नो यू एसोसिएट अ सर्टन इमेज विद मॉम, and then you see your own mom who's like a working, and she's an independent woman, right? She's working, वो घर का भी ध्यान रख रही है, but then I would feel like, you know, there's something that my mom is not doing, she's absent, and you know she's not around, and then I just looked at her like that she's so imperfect as a mother, that you know she's away, उनके बच्चे तो यहाँ पर हैं, सब बच्चों की मम्मी आती है, मेरी मम्मी नहीं आती. And then I realized that this was a woman who was taking care of her own ambitions. She comes from a village in Uttarakhand. She comes to the city. She finds her own way in Uttarakhand cinema, and she becomes one of the biggest names there of her time. She's doing that while having 3 kids, sending them to school. And it's also not कि वो जब जाती थी तो हमारे खाने वाने का कोई आता पता नहीं. She would arrange everything. And then I remember she would come back after weeks of travel, come back, put the bag right next to the main door, head to the kitchen to cook something for all of us. And then we would be so thankless कि हाँ आप आके कर रहे हो, इतने टाइम से तो आप नहीं थे. Now that I grow up, I feel that we were so cruel about all of that, because you know, and entitled and like complaining about, matlab, you know, like I mean she's also a person, right? Which is what brings me to my next point, that I feel that जो भी एक मम्मी करती है ना, we always see this as a mother is doing it, not a person is doing it. Like mother is a role that you play. It's not your entire existence. It's not your personality. She's a human being, right? She has her own aspirations. And like when our parents were our age, उनके बच्चे हो चुके थे. हम लोग अभी इतने ambitious हैं, हम लोग सोचते नहीं हमें लाइफ में ये नहीं करना, वो नहीं करना. What about our parents? Like उनको तो शादी प्रेशर से, प्रेशर था सोसाइटी का, तो करनी पड़ी थी शादी. बट उनके एम्बिशंस का क्या, उनको कब टाइम मिला होगा अपने लिए सोचने का. And I don't think we ever think that. We don't look at our mothers like people. And I think it जिस स्पेस से ये चीज़ आती है, ये कॉन्सेप्ट आता है, वही सेक्सिज्म, ऑफ कोर्स, पेट्रियार्की, और प्लस उस जनरेशन की हम बात कर रहे हैं. अभी भी हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कितना ग्राउंड पे हम क्या कर रहे हैं, nobody knows, right? What is happening behind closed doors, nobody knows. But it's unfair, and it's so my mom runs a boutique, okay, and she really does it out of passion, and she's always done it, although she again struggled it, because so my dadu wasn't really cool with she pursuing, you know, this back in those days when she had just got married. So because we had factories and all, and he's like, I'm not really cool with my daughter-in-law, like, you know, running her own boutique and everything. And then like but he was still enough, like nice enough, and she continued and everything. Now she's old, but she still continues her work. मैं अभी घर पे होता ना, मैं कभी बोल देता हूँ कि यार भूख लगी थी. She would leave her work and she would get up. And I feel so sad. And that, you know, visual for me is not that, मुझे guilt भी होता है, but then I was like, dude, ये क्या इंसान है. मतलब मैं अगर मेरे लिए काम बहुत बड़ी चीज़ है. It's really like worship for me, because also I'm not very social, or I don't have any other let's say hobbies. मुझे मेरा काम अच्छा लगता है, मेरा काम ही मेरी हॉबी है. मेरे लिए recreation is creating videos, मेरे लिए recreation is researching about something, मेरे लिए recreation is producing a nice news piece. So अगर मैं कुछ कर रहा हूँ और अंकुश comes and he's like ये करें, मैं कभी भी नहीं उठूंगा, मैं कभी भी नहीं हिलूंगा. And I know how passionate she is and how happy she feels when she does it. The way she gets up, it's so endearing. And we were, and she loves her job, and she loves the appreciation she gets out of it. But the moment मैंने ये बोला कि कुछ खाएं, she would leave and get up. Same. And I'm like,
My mom will be tired from shoots, but अभी भी she'll come back from a shoot और वो तभी आई होंगी, मुझे दिख रहा है उनका बैग वहीं है, वो वहीं रखती है. ऑल्सो मुझे गढ़वाली सीखनी है उन वीडियोस से. यार मैं तो सीख नहीं पाया. माई मॉम विल बी वेरी हैप्पी टू टीच यू कि मैं नहीं सीख पाया. बट ये होता है यार. एंड मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ना कहीं हद तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रग अवे करने के लिए ना ऐसे ग्लोरीफाई कर देते हैं कि वो मम्मियाँ कितनी महान होती हैं, सब कर लेती है, ऑफिस का काम देख लेती है, घर का काम देख लेती हैं. और औरत फॉर दैट मैटर कि औरत बहुत महान है, लड़कियां क्यों? मल्टीटास्क कर सकती हैं. पर नो उनको ब्रो, वो कर नहीं सकती, वो उन्हें करना पड़ता है. उन्हें करना पड़ रहा है. एंड हम भी अभी ये बातें कर रहे हैं, बट लाइक आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली गो एंड हेल्प हर विद. एग्जैक्टली. जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बोला था कि मतलब तुम केक तो ले आओगे उनके लिए, लेकिन वो बर्तन उन्हीं को धोने पड़ेंगे. विच इज़ वाई समटाइम्स यू नो मुझे समझ नहीं आता था बचपन में जब हम मम्मी के बर्थडे पे ना खाना ऑर्डर कर देते थे. एंड शीट बी लाइक यार बाहर जाके खाते हैं, एंड वील बी लाइक घर पे बैठे खाते हैं. एंड नाउ आई रियलाइज क्योंकि वो बर्तन तो उन्हीं को धोने पड़ेंगे बाद में, तो तुम उनके लिए कुछ स्पेशल कर भी रहे हो. और स्पेशली जब मम्मियों के लिए गिफ्ट देने होते हैं ना, हम हमेशा होम अप्लायंस दे देंगे. क्यों? मतलब उनका पर्सनल कुछ नहीं है. लाइक हर रोल इज जस्ट टू लुक आफ्टर द हाउस. तो अगर तुमको गिफ्ट देना है तो उनको तुम वॉशिंग मशीन गिफ्ट दे दो, फ्रिज गिफ्ट दे दो. नो, बट दैट्स समथिंग दैट्स बीइंग यूज्ड बाय एवरीवन. व्हाट अबाउट हर गिफ्ट? You know, like, why is that gift not for her, the person that she is? So, I mean, to the listeners listening to this, like, I mean, this is something that we all need to think about. That this is not something you glorify कि वो मम्मियाँ महान है, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है. You know, उनको अपना करियर भी देख, like, करियर होना ही for so many women is such a, you know, rare thing कि they're even in a position where they can have a career. सो दैट्स वाई दे हसल सो मच, क्योंकि उनको पता है कि घर का काम तो करना ही करना है. अब अगर मुझे करियर, अगर मेरे कुछ एम्बिशंस हैं तो मुझे ये साथ में ही करना पड़ेगा. सो एनीथिंग दैट यू डू इन लाइफ, डू यू थिंक ऑफ इट्स रेपरकशंस ऑन यू नो व्हाट योर मदर वुड थिंक? ऐसा होता है? या अ लॉट ऑफ टाइम्स. एंड देयर आर मोमेंट्स एंड आई एम लाइक, अगर मैं कुछ डिसीजन लेने जा रहा हूँ ना, शी माइट नॉट बी हैप्पी विद दिस एंड आई वोंट डू इट. बट आई थिंक अगेन दैट कम्स फ्रॉम द स्पेस वेयर आई एम टू डिपेंडेंट ऑल्सो on her. छोटे से छोटा decision भी है. If it's about like choosing a table, and I'm like, will my mom like it? And I'll click a picture and send it to her. And if she says, and even if I want it, for example, if I really like this brown table, I want it. And if she says ये बहुत dark है, you won't buy it. I would feel so irritated, but I would still not buy it. And फिर I would crib about it that you didn't let me have this. But मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें blame करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो मेरी चॉइस है टू गो विद हर चॉइस. That's exactly the same what my mom does with me. Like she'll be like, ये मैंने सूट खरीदा कैसा है, और मैं तो माइंड से बोल रहा हूँ बहुत लाउड है, ये है वो है. And then she'll return it and she'll get something else. And then the second suit I like but she won't like, but she'll still keep it and crib कि यार मेरी पसंद का नहीं है. I was like, तो आपने अपनी पसंद का क्यों नहीं लिया? She's like, पर तू बोलता कि अच्छा नहीं है. And then I feel कि यार मतलब मेरी वैलिडेशन इतनी ज़रूरी है आपके लिए लाइफ में, और कोई There's नहीं another है. thing that she does is कि अगर इस बार मैंने पूछा और अभी रिसेंटली कुछ ऐसा ही हुआ है, तो she would say, वैसे मुझे तो लाइट कलर अच्छा लग रहा है, बट आपको जो अच्छा लगता है वो ले लो, बिकॉज फिर आप बाद में मुझे बोलोगे, विच इज़ इवन मोर हर्टफुल. एंड आई एम लाइक ओके, नाउ शी टोल्ड मी कि वो नहीं अच्छा है. सेकंड शी टोल्ड मी कि भाई तू कर ले अपनी मन की, क्योंकि तुझे बाद में बुरा लगेगा, या फिर तू मुझे सुनाएगा. एंड आई एम लाइक नाउ व्हाट डू आई डू? But do you like it when your mother chooses things for you? यार बिकॉज मैंने बहुत सारे डिसीजन में देखा है, इवेंचुअली टर्न्स आउट टू बी राइट. वो सही होते हैं, मम्मी सही होती हैं. हाँ, मतलब मेरे लिए चीज़ें वर्कआउट की हैं. शी सेड समथिंग तो आई एम लाइक ठीक है, दिस वर्क्स. सो Does she like a bearded stubble look on you, or does she like short hair? Like appearance wise, what does she like on you? she really likes a neat look. And you don't like that? I'm okay, I don't. यार मैंने तो शेव करा लिया, मुझे तो लग रहा था मम्मी सबसे ज़्यादा खुश होंगी कि मतलब बच्चा ऐसे साफ सुथरा बन के आ गया. उनको तो लगता है ना कि दाढ़ी है तो देवदास है ये, एंड व्हाटएवर. मैं गया, वो कहते तू तो ऐसे छिला हुआ मुर्गा लग रहा है. माय मॉम इज सैवेज, लाइक शी इज जस्ट लाइक. बीच में मैंने मूछें रखी थी, देन इट्स लाइक अरुण ये मत रख, तू बिल्कुल बाबा लगता है. एंड शी लाइक तू बाबा इज लाइक, पंजाबी बाबा इज लाइक बूढ़ा इंसान. शी लाइक बाबा लग रहा है तू. एंड देन शी लाइक तू अंकल ज़्यादा सीरियसली तो नहीं ले गया, तू उन मुच्छां भी रख लिया हैं, तू बहुत बड़ा लगता है अरुण, ना कर. I'm like, थोड़े दिन के लिए. What does she think of your content, like जो अंकल वीडियोस you make? She fears कि मैं उन पे बना दूंगा. नहीं, she fears कि मैं एक्चुअली ऐसा बन जाऊंगा. And she's like, अरुण तू because anyway she jokes about this कि तू बुड्ढा बाबा, because मुझे ठंड जैसे ज़्यादा लगती है. So I will be like मैं लेयरिंग कर लेता हूँ, मम्मा रजाई निकाल दो, जब घर में सब कंबल ले रहे होते हैं. तो माई मॉम यूजली जोक्स कि ये हमारे घर का बूढ़ा इंसान है. तो शी से थिंग्स कि
एंड एज आई टोल्ड यू लाइक ये मेरे पापा के बारे में भी बोला जाता है कि वो अपनी उम्र से थोड़ा बड़े बिहेव करते हैं. एंड माई मॉम इज लाइक अरुण प्लीज अपने पापा वर्गा ना बन जाए बिकॉज इज लाइक ऑलवेज लाइक सो ओल्ड इन हिज हेड एंड यू वुड हैव थॉट्स एंड शी लाइक अरुण प्लीज ये करते करते एक्टिंग बन मत जाइयो. ये बन मत जाइयो अंकल हु इज ऑलवेज क्रिबिंग और हु इज ऑल नुक्स निकालता रह रहा है. Interesting. But Arun, मुझे ये बता, do you think, honestly answer करना, do you think of your mother like a person? Do you know her hobbies? Do you think you know her well? Because I mean, let's face it, relationship is a two-way thing, right? But somehow our mothers always know us inside out. Yeah. कि what we like, what our hobbies are, और हमें बताने की ज़रूरत नहीं है. वो हमें इतना ऑब्जर्व करती है through their lives that they just know it without having that conversation. But do we know them as well? Do you know your mother as well? If I say yes, that would be my claim. There's Yeah, no way that to would- know. Yeah. But do you feel that you've ever sat her down and asked her about मम्मी आपको क्या करना है लाइफ में, आपको क्या पसंद है करना? आप do you know what your mother does when she's alone at home and nobody's around? Yeah, she does her boutique thing, which she really enjoys and likes, and it's therapeutic for her. But when she's not working, let's say she's not doing घर के काम, she's not doing अपना काम, professional काम, what is she doing when she's alone? Do you know that? Not really. Exactly. Hmm. We don't think these things, True. but they'll know. If I ask this question to your mother, she will know what you do when you're not doing anything. या उसमें से 4 ताने भी मार देंगी. हाँ इससे अच्छा लगता है. इससे अच्छा लगता है वेला बैठना, टाइम वेस्ट करना, वीडियोस देखना. But yeah, she would know. But I mean, does there ever come a time where we give it back to our mothers and like help them as people who really understand them and make them realize what their passions are, what their ambitions are, what they want to do in life? Because it's never really that late, no? Yeah. Does there ever come that time For for us to enable and empower our mothers? there should be, I believe. There should be. Yeah. There really should be. Yeah. That's when we sort our life probably and then move on. But वही तो बात है ना कि Exactly. उनकी लाइफ में भी हम पहले आ रहे हैं, हमारी हमारे लाइफ लाइफ में में भी हम पहले आ रहे हैं. Priorities basically. Right, right. It's those priorities are flawed. Yeah, I feel that तुम जितना भी every time you talk about mothers, तुम जितना भी glorify कर लो, जितनी भी तारीफ कर लो, I feel that the reality is that being a mother is a very ungrateful role, I feel. Yeah. And we're all to blame. Just because हम ये बात करें doesn't free us of that, True. guilt. We're also a part of that system. हम लोग जितना भी बोल रहे हैं, हम लोग घर के कामों में नहीं हेल्प करते. Most of us, we don't. हम जितना भी अच्छे से उनको एक मदर्स डे पे ट्रीट कर लें, her life doesn't elevate just because of that one Mother's Day wish, which makes us come to the next section, which is called कुछ करते हैं यार. So I want you to call your mother Okay. and just talk to her about something. Just ask her what her passion is, what she likes doing, Okay. which You has want- got nothing to do with. Which has got Should I do nothing. it now? Yeah. My phone is on flight mode first. Let me turn that off. Okay. Logistical issues. No, but I just want you to talk to her like she's a person and not a mother. Cool. Wow, this is making me feel so awkward and weird. She's like talking to my mom. Such an organic thing, but हमें भी थोड़े असली में ताने सुनने को मिले ना. अब असलियत पता चलेगी. I hope she picks. Oh wow, ये भी तो है. Hope she picks. Bell गई वो भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन फोन ऐसी जगह पे होता है कि it usually doesn't go through. You know what I'll have to do? I'll have to call dad and मम्मा को बोलो फोन उठाओ. Oh wow, this is too real. This podcast is too Hello? real. हाँ जी. Good afternoon. आफ्टरनून जी. क्या हाल चाल? बस बढ़िया. क्या कर रहे हो? मैं डॉक्टर के पास आई हूँ. क्या हुआ? नी दिखाने के लिए. क्यों? वो नी पेन हो रहे थे बहुत, तो उसने बोला कि एक्सरे करवाओ. नीचे बैठे हुए वेट कर रहे हैं. Oh my God. मतलब कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा हो गया था या क्या? हाँ यही कह रहे हैं शायद. तो ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ? हाँ कई जगह तो थोड़े से दिन लेके छोड़ देते थे. हाँ. वेरी और गुड. आप सुनाओ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं ज़रा वही शूट पे आया हुआ था, तो मैंने सोचा मैं फ्री था बीच में, तो सोचा मैं बात कर लूँ. पापा साथ आए हो? पापा के साथ. हाँ. अच्छा. कुछ नहीं, हम बात ही कर रहे थे. आपका क्या नंबर अभी आना है या आने वाला है? क्या सीन है? बस मेरा एक्सरे करवाने के लिए आई हूँ. आ गया.
ओके ठीक है चलो ध्यान रखो फिर मैं हाँ हेलो जी गुड आफ्टरनून ਅੱਜ ਭਾਈ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੀਗਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਣੀ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟਾਈਪਸ ਉਹ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਹਜੇ ਗੁੜਗਾਉਂ 'ਚ ਹੀ ਆ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰਸਨਲ ਹੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਫਿਸ का है कुछ का नहीं वो तो स्टैंड अप कॉमेडी ਹੁੰਦੀ ਹੈ And that brings us to the end of the podcast, Arun. Almost the end of the podcast. sad I'm going to ask you what your final word is on this. Define the word gentleman in one word. sensible and when I say sensible it means like sensible to have sensibilities about the environment. Of course all of us are work in progress but to be sensitive towards things that are around you just makes you a better person every day. आप आज शायद problematic हो सकते हैं but if you're just sensible You'll learn, you'll grow. you'll pick that sense and that's how you'll grow. Yeah, I think I like the ring of it because I think more than anything else it's important to be a sensible person first. And that's how you become a gentleman. Yeah, I agree. It was great having you, Arun. This is such an insightful and beautiful conversation and I hope you enjoyed it too. Yes I did, thanks. Thank you.